Hello, good afternoon, all. Good afternoon, all. Welcoming all. Yeah. So, our today's lecture is on normal antenatal care and the preconceptional counseling. This topic will last for maybe 2 or 3 days, and in this topic, I will also include investigations at a particular time, which investigations to be offered, and how to interpret it and how to read it. So 2 to 3 days this lecture is going on. So normal antenatal care along with all the investigations to be prescribed at when required, and management for that. Any of you have doubt regarding yesterday's means last two lectures, or we move proceed? Okay. So we are starting our lecture. What do you mean by normal antenatal care? What is mean that? Normal antenatal care and preconceptional counseling means careful of history taking for antenatal woman, and proper examination and proper advice given to the pregnant woman. You had to eat these things, you had to undergo these investigations. So, provide proper advice to the pregnant woman. So, main three objectives are properly history taking, examination, and advice. In advice, it will count for investigations as and when required, and advice regarding diet, hygiene, cleanliness, etc. So, this all comes under normal antenatal care and the preconceptional counseling. Why we are more focusing on this care? Because our main object as a consultant as well as by the patient, the main objective is to ensure a normal pregnancy with delivery of healthy baby from healthy mother. The ideal aim is what patient want and what the doctor want. Delivery of healthy baby without any complication to the mother. That is our main objective. So criteria for normal pregnancy are, what is mean that? What do you mean the normal? Delivery of single baby in a good condition at a term between 38 to 42 weeks. That is the ideal time. What do you mean by ideal time? Term baby is 38 to 42 weeks. Less than 37 weeks are termed as a preterm baby. Less than or equal to 37 week termed as a preterm baby. What is term baby? Delivery between 38 to 42 weeks are termed as term baby. With a fetal weight 2.5 kg or more with no maternal complications. So, it is the ideal definition of normal pregnancy with normal child. So, understood? Delivery at a term between 38 to 42 weeks with baby weight 2.5 kg or more and no maternal complication is termed as normal pregnancy. Here we are not discussing the mode of delivery.
Mode of delivery could be normal, could be cesarean section, but the main outcome is delivery of healthy baby of 2.5 kg or more without maternal and fetal complications are termed as a normal pregnancy care or normal pregnancy. Understood everyone? Okay. Now, at a first visit, when any patient visiting first time, proper history taking is very important. As I seen many practitioners and consultant, they are not writing proper history. But to become good consultant, history taking is very important because most of the investigations and diagnosis can be made on history taking. So, you will be more precise in diagnosis when you have done a proper history. Ideal time of first visit as soon as pregnant lady miss the period, because in past they believe that we have to go to the doctor at after 2 months, after 4 months, after 5 months, but somebody asks you where should be the first, when should be the first visit. First visit should be first come first. As she miss the period, first visit to the consultant should be there. Now we are moving to the history part. Here I had made a proper history taking pro forma of a pregnant ladies. You can this method apply in your practice also. If you follow these steps, you will not going to miss a single thing. And here every step has importance. First of all, name, full name, not like that Rama Desai. You have to write Rama Lakshman Bhai Desai, because sometimes what happens, two name people files are there. So we may wrongly interpret it. So always write a full name. Whenever you write a name of the patient on your prescription or on a file, always make a habit to write a full form. These things are very little, but you should have to apply in your practice. Age. Age is also very plays a important role, because you can find whether this patient is high risk or not by only the age group. If the pregnant lady's age group less than 18 or more than 35, it comes under higher pregnancy and complications are little bit higher. So age, importance of the age. Address. Full address is also important, because we know certain diseases are common in particular areas. So full address is required. Date of examination. Always write when you had examined last time. History of days or months of amenorrhea. 1 month, 2 days. We are writing like 1 month, 5 days, 1 month, 6 days in aspect of LMP and LMP. Then comes the menstrual history, LMP and the EDD. I taught you how to calculate EDD from the LMP. So always precise in calculation of EDD. Write LMP and the EDD. From that you can write these months of amenorrhea. Suppose patient have last menstrual period 15th of May 2020.
and today comes to us for consultation. So I will write it down. 1 month 5 days amenorrhea with LMP 15th May 2020. Got it? How to write month of amenorrhea? Clear? हाँ. Suppose आपको लिखना है हिस्ट्री ऑफ मंथ ऑफ एमेनोरिया. व्हाट इज मीन दैट? राइट द LMP. सपोज पेशेंट LMP is 15th May 15/5/2020 and today she came to you. So what you will write down? Today is 28th June. So you will write down 1 month 5 days amenorrhea, because patient will not tell you. You have to write by calculating from LMP. Got it? सिंपल. 15 मई है तो आज 20 है तो कितना हुआ? 1 month 5 days एमेनोरिया. क्लियर? ओके. नाउ you have to write it down gravidity and the parity. What is that? Are you aware this this sign? Because most of where they are written as the gravida and the parity. What do you mean by gravida? What do you mean by gravida? Gravida is pregnant state both present and past. Means suppose patient is pregnant this time, and if even she has one missed abortion, then gravidity will be 2. G2. It's written as like this. G2. This continued pregnancy and one history of missed abortion. Now what do you mean by parity? Parity means नंबर. पैरिटी में नीचे ABCD ऐसे लिखते हैं. A means number of term pregnancy. B means any preterm delivery between 28 to 37 weeks is called preterm. C means number of miscarriages if it is less than 28 weeks. And D means number of live children. So here I will write it down as G2PC. Clear? Hello? सिंपल. और आपको ऐसा नहीं करना है तो मैं सिंपली ऐसे लिखती हूँ. आपको सिंपल, ये बुक का है, आपको सिंपल सिखाओ ना तो सिंपल यू कैन राइट इट डाउन G2 पैरिटी 0, एक भी लाइव इश्यू नहीं है, और अबॉर्शन हुआ है तो अबॉर्शन 0 एंड L लिविंग इश्यू 0. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस लाइक दिस. G2, P0, A0 and L0. G2 means gravidity, parity, abortion and live issue. कितने हैं? Got it? How will you write gravidity, parity, abortion and live issue? हाँ, देखिए पैरिटी में 4 चीजें आएगी. पैरिटी मीन्स A मीन्स नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी. मीन्स जो जिसका डिलीवर हो चुका है वो पैरिटी में आएगा. तो A मीन्स नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ A मीन्स अबॉर्शन एंड L मीन्स ये बुक का है, नया आया है, पर मैं ये सिंपल फॉर्मूला GPAL याद रखो आप. सिंपल. ग्रेविडिटी मीन्स जितनी भी बार वो प्रेग्नेंट हुई ना उसको ग्रेविडिटी बोलते हैं. गॉट इट? पैरिटी मीन्स जितने लाइव इश्यू हुए हैं वो पैरिटी में आएंगे. अबॉर्शन मीन्स जितने अबॉर्शन हुए हैं. हियर 1 अबॉर्शन हुआ है तो हियर आई हैड रिटन रॉन्ग. हियर 1 अबॉर्शन ऐसा आएगा.
और लाइव इश्यू है कि नहीं, 0। चलो मैं एक एग्जांपल सबको देती हूँ, एवरीवन विल टेल यू, गिव मी द आंसर। सपोज लिखिए, आपको लिखना हो तो एक बुक में आप लिखिए, मैं बोलती हूँ। पेशेंट कम्स टू मी टुडे, हिस्ट्री ऑफ 2 month amenorrhea, history of 1 abortion at 8 weeks before 2 years, history of 1 abortion at 8 weeks before 2 years। 8 weeks का एक अबॉर्शन हुआ है 2 साल पहले पेशेंट को। हिस्ट्री ऑफ 1 full term नॉर्मल डिलीवरी, 1 year का चाइल्ड बिफोर 1 year पहले एक डिलीवरी हो चुकी है और अभी वो 2 months से मेनोरिया के साथ प्रेजेंट है। तो हाउ विल यू राइट दिस थिंग? L G3, how will you G3? Because हाँ या G G हाँ हाँ हाँ, तो G3P1 एक लाइव है ना, A0 A1 L1। गॉट इट कैसे लिखते हो? हाँ, तो ये ऐसा लिखना पड़ता है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंस, वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज हमें पता चले कि आगे इसके कितना प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, कि इट इज अ केस ऑफ आरपीएल है कि नहीं है, प्रीटर्म हुआ है तो हम इस बार क्या ध्यान रखेंगे। सो एवरीथिंग वी शुड हैव कीप इन माइंड। सो इसके लिए ग्रेविडिटी पैरिटी लिखना बहुत ज़रूरी है। नाउ ask about active married life. If primary means if nullipara पहली बार प्रेगनेंसी रुकी है तो ऑलवेज आस्क फॉर एक्टिव मैरिड लाइफ। और आगे एक भी चाइल्ड है तो यू राइट डाउन दैट प्रॉपर हिस्ट्री, लाइक हिस्ट्री ऑफ 1 abortion, हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, हिस्ट्री ऑफ फुल टर्म डिलीवरी, हिस्ट्री ऑफ एमटीपी पिल। बट पहली बार प्रेगनेंसी रुकी है तो ऑलवेज राइट डाउन एक्टिव मैरिड लाइफ। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? Why active married life here is important? Okay, fine. Second, active married life is important if active married life is more than 4-5 years or more than 10 years like that. So it is the precious pregnancy. Patient 10 साल से ट्राई कर रहा है और अभी पहली बार प्रेगनेंसी रुकी है, तो हमें उसका दूसरे से बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। Understood? So we assume it is a precious pregnancy. So whenever any primary patient, always ask for active married life. Then occupation. It is also important because what the patient is doing, whether it is she is a housewife or if she is working in any company, what she work is doing is also reflecting her pregnancy status. So occupation. Then comes the chief complaints. What are the chief complaints to you? That we had discussed earlier. Suppose first trimester होगा तो most of the complaints will be nausea, vomiting, abdominal pain, lethargy, fatigue. Whatever the complaint she have, you write down the chief complaints. Then ask for history of any major disease, blood transfusion, surgery. So you have to take care all that things here. Suppose if you had not asked this history and patient have severe valvular heart disease, patient is not going to tell you, patient will think that it's a pregnancy, why I have to inform that. And you also not ask the patient about the any major disease, she had undergone any surgery or she is on long term medicine. So you and patient both will be in trouble. So it's our duty to ask a cross question, like, okay, if you are having any major disease, you are on any medication, if you had
This history should be taken at a very first visit. If you had all these things write down in a paper, then every time you need not to ask these all questions. Next visit only you ask for chief complaints, because everything you had documented in a paper. So every visit you have not to ask all these things. But in a first visit, it's very important to ask all these things. Detailed obstetric history. What is detailed? Because as I already told you, patient will not going to tell you she had taken empty people drugs in the past, history of missed abortion, history of preterm deliveries, history of any malformed baby's delivery, because she is not going to reveal her bad part. But you have to ask to prevent complication in this future pregnancy. So always take a detailed history, obstetric history like that. Have you any misabortion? Have you any curating history? Have you any malformed baby? Everything you have to ask. Then ask about the family history. Family history means any major disease runs in like a genetic disorder history. So ask about female history. Personal history, ask about history of contraception she is using, if she had used, history of smoking, alcohol, MTP pills, allergy, everything. This all detailed history you should ask. This completes our history part. So this is a very good pro forma you can apply in your clinic. All these things, if you had asked proper way in a first visit, then you will not put in the trouble in subsequent visits. Now comes the on examination, means now history part is completed. Now you will going to examine. How will you examine the patient? Always check height, weight. What is importance of checking height in obstetrics? Why height is important? Anybody have answer? In pregnancy, pregnant ladies, why important to measure height? No one? Yeah, very good. Because if the patient is very short stature, suppose less than 4'7", 4 इंच 7 फीट, 4'7" से ज्यादा उसकी हाइट है, तो देर में बी द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, उसको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलते हैं. सो दैट पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी मे नॉट बी पॉसिबल. So that's why height is important. If short stature, if you feel, suppose ऐसा तो नहीं है कि हम सबकी height measure करते हैं, but if you feel any short stature patient, then you had to mention in your file that it is a short stature patient. So you have to keep in mind at the time of delivery. Then weight. Weight, as we discussed in our previous lecture, weight is also very important for to see normal growth and everything. Then C for pallor. Always look for pallor and jaundice in pregnancy, because you by doing only general examination you can see, then you can advise accordingly. Pallor you will see on the lower part of the sclera, nail, tongue, jaundice in the sclera for yellowish discoloration. Check for the edema of the leg. Every visit you have to check for edema and differentiate from the pathological cause of edema to the physiological edema. TPR, temperature, pulse and respiratory rate. Blood pressure is also very, very important. Respiratory and CVS examination. These are very basic examination. You had at least had a once visit, thus these all things are normal. Then obstetric examination per abdomen. SOS जब आपको लगता है, then do per speculum and per vaginal examination if patient having any complaint of vaginal discharge, abdominal pain. In that case do the PS and the PV. But per abdomen examination is usually we are doing. Here comes our examination part. Now we moving to the investigations part. Okay.
So first we had taken proper antenatal history, then we moved to the examination part, then afterwards we will advise investigations. So on the first visit, we recommend this list of tests: CBC, blood group, RBS, SOS, HB1AC. HB1AC is a marker of sugar. Because when we have doubt, we always recommend HB1AC. What is HB1AC? It is a 3 months titer of blood sugar value. Serum creatinine, VDRL, HbSAg, HIV, serum TSH, HB electrophoresis and urine routine micro. These are basic investigations you should advise in a first visit. Clear? क्या क्या? HB1AC. व्हाट इज HB1AC? जो HB1AC है ना, वो 3 मंथ्स के जो शुगर होते हैं ना, उसका 3 मंथ्स का टाइटर है. सपोज आप RBS कराते हो, पर कई बार RBS रैंडम ब्लड शुगर में डाउट होता है आपको कि ये सही है कि गलत है, तो हम क्या कराते हैं? FBS और PPBS, फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर. पर उसमें भी कई बार हमें डाउट होता है. डाउट यानी ये सही है कि नहीं है, बॉर्डर लाइन जब रिजल्ट आता है ना, तो ऐसे केसेस में सपोज जिसकी एज ज्यादा है, तो HB1AC इज एडवाइजेबल. व्हाट इज दैट? HB1AC क्या करेगा? वो 3 महीने में जो भी शुगर का फ्लक्चुएशंस बॉडी में हुआ है, तो वो 3 महीने का टाइट्रेशन आपको देगा. वो ऐसा बोलेगा कि इनकी ब्लड शुगर एवरेज 130 के अराउंड 3 महीनों का होके हुई है. सो पास्ट 3 मंथ्स का रिजल्ट दिखाता है ये. तो पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं है, वो HB1AC से झट से आपको पता चल जाता है. क्लियर? ओके. नाउ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस. Special investigations, within 10 minutes meeting will going to end, so you have to again log in. What is special investigations? Double marker test. What is that? सब में ये डबल मार्कर टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है, वो आप पे और पेशेंट पे निर्भर करेगा. Why? Because डबल मार्कर टेस्ट है that are used to detect any trisomy, any congenital malformation in the baby. It detects free beta HCG and PAPA, pregnancy associated plasma protein. मैंने कल आपको बोला था कि बीटा HCG लेवल एज सुन एज प्रेगनेंसी होती है तब राइज होता है और एवरी 48 आवर्स पे डबलिंग होता है. ठीक है ना? पर वो कब तक बढ़ता है? वो 10,000 20,000 इज मैक्सिमम. फिर आगे जाके उसका इतना राइज होता नहीं है. बिकॉज विदिन 6 weeks कॉर्पस ल्यूटियल फंक्शन विल टेकन अप बाय द प्लेसेंटा ग्रेजुअली. सो बीटा HCG उससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा. पर कई बार HCG का ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ना भी बुरा माना जाता है. तो to detect free beta HCG and PAPA, pregnancy associated plasma protein, detected by double marker test, किस में हम कराएंगे? इफ पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी एज ग्रुप प्राइमी ग्रेविडा है और एज ग्रुप मोर देन 35 है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ बर्थ डिफेक्ट चाइल्ड है, प्रीवियस चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट है, तो ऐसे केसेस में डबल मार्कर टेस्ट कराते हैं. It is done between 11 to 14 weeks of the pregnancy. पेशेंट इस स्टेज में आता है तो यू विल एडवाइज द डबल मार्कर. हाउ टू इंटरप्रेट? सपोज दे विल राइट दैट दिस पेशेंट इज at a lower risk for trisomy 21 and trisomy 18. What is that? They will not that write that के या इसको ट्राइसोमी है ही.
they will give rise to in a whether this patient is at a low risk or at a high risk. If it is positive, what is that means? This patient is at a higher risk for developing trisomy 21, 13 and 18. 21 is Down syndrome, 13 is Patau and 18 is Edward syndrome. So they will write that 1 raised to 250 risk means 1 out of 250 women are having similar results. So if you interpret the result, they will write that this patient is at a lower risk, means you have to do nothing. But if this patient is at a higher risk, then you should advise to go for further testing. Understood what is double marker test? हेलो, क्या क्या पता नहीं चला? नहीं पता चला, क्या पूछा आपने? हेलो, हाँ क्या पूछा आपने? नहीं पता चला मुझे. हाँ, ना ऐसे नहीं. आप किसी का भी रिपोर्ट देखोगे ना तो वो लोग लिखेंगे दिस पेशेंट इज एट अ लोअर रिस्क और दिस पेशेंट विल बी एट अ हायर रिस्क. वो ऐसा ही रिपोर्ट में देंगे. लोअर रिस्क है तो आपको कुछ नहीं करना है, बट इफ इट इज एट अ हायर रिस्क तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे. वो क्या करने पड़ेंगे वो हम देखते हैं. वो आप जब मेट्रोपोलिस या किसी में भी रिपोर्ट भेजते हो ना, तो वो आपको ये सिंपल ब्लड रिपोर्ट ही होता है. तो एक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भेजना होता है और उसके साथ वो विक्स देख के इनका लेवल देखेंगे. ये आप सिर्फ सिंपल पेशेंट को भेजो कि डबल मार्कर करा के आओ तो कोई नहीं करा के देगा. आपको डबल मार्कर के साथ ऑलवेज एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड 11 वीक्स का चाहिए. 11 वीक्स का अल्ट्रासाउंड होगा तो ही आपको वो डबल मार्कर करके देगा. ठीक है, तो वो डबल मार्कर में आपने रिपोर्ट देखा होगा, तो उसमें कैसे रिपोर्ट आते हैं पता है? वो लिखेंगे दिस पेशेंट इज एट अ लोअर रिस्क फॉर ट्राइसोमी, और यूजुअली 1:250 का वो लोग रेशियो देते हैं. पर हाँ, पर मोस्टली और कई बार वो ऐसा आएगा कि दिस पेशेंट इज एट अ हायर रिस्क फॉर ट्राइसोमी 18. तो जब ऐसा रिपोर्ट आया तो आपको फिर आगे सीवीएस कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कराना पड़ेगा. वो मैं आगे समझाती हूँ उसका, कि पॉजिटिव आया तो क्या करने का और नेगेटिव आया तो कुछ नहीं करने का. इससे आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोअर रिस्क मीन्स आपके चांसेस बहुत कम है. 250 पेशेंट में ऐसे लोअर रिस्क वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें एकाध पेशेंट को आ सकता है, बट 249 पेशेंट को नहीं आता है. सो इट ओनली टेल्स यू अबाउट रिस्क. 100% नहीं होगा ऐसा तो किसी के पास कुछ नहीं है साइंस. तो ऑलवेज एक्सप्लेन द पेशेंट बाय डूइंग दिस टेस्ट we are assured that this baby is not having problem, but in 1% anything can be happen. Okay, so डबल मार्कर के साथ आपको यूएसजी फिटस फॉर एंटी स्कैन भी कराना होता है. अभी अल्ट्रासाउंड आप कब कब कराओगे? पहले तो एज अर्ली एज पॉसिबल एट 6 to 7 वीक्स फॉर वायबिलिटी. 6 वीक्स 1 मंथ 15 डेज से 1 मंथ 20 डेज पे पहला यूएसजी आइडियली होना चाहिए टू चेक फॉर वायबिलिटी. बिकॉज जो फिटल हार्ट रेट है वो कल मैंने बोला था कितने पे आते हैं? 6 वीक्स पे आ जाते हैं. याद है सबको? हाँ, तो ऑलवेज फर्स्ट यूएसजी एट 6 to 7 वीक्स टू चेक फॉर वायबिलिटी. गॉट इट? अभी 11 वीक्स के आपको एंटी स्कैन कराना पड़ेगा. व्हाट इज एंटी स्कैन? इट इज कॉल्ड न्यूरल थिकनेस स्कैन. व्हाट इज दैट?
सी हियर मैंने बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर रखा है. दिस इज कॉल्ड एंटी. ये 11 वीक्स का स्कैन है. ये है ना बेबी का हेड है. ठीक है. और उसके नेक रीजन में जो फ्लूइड कलेक्शन होता है उसका थिकनेस मेजर करते हैं. उसको नकल थिकनेस बोलते हैं. और नेजल बोन देखते हैं. ये दोनों चीजें एंटी स्कैन में आती है. अगर ये दोनों नॉर्मल है तो पेशेंट को ट्राइसोमी मीन्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. What is that? Sonographic appearance of collection of the fluid under the skin behind the fetal neck is called neural thickness. जब CRL 45 to 84 mm के बीच में होती है तभी ये एंटी स्कैन होता है. कभी भी हम नहीं करा सकते. सो आइडियल टाइम टू डू एंटी स्कैन इज 11 to 12 वीक के बीच में कराने का. और उस टाइम पे एंटी स्कैन लेस देन 2.5 mm होना चाहिए. आपकी जो न्यूरल थिकनेस बेबी की शुड बी लेस देन 2.5. अगर वो मोर देन 2.5 है तो इट इज एबनॉर्मल एंड दिस बेबी मे हैव चांसेस ऑफ ट्राइसोमी. सो आपको फर्दर सीवीएस या एमनियोसेंटेसिस करना पड़ेगा. वो मैं आगे समझाती हूँ. दिस इज एबनॉर्मल. सी दिस इज एबनॉर्मल एंटी and this is normal anti. Can you see the difference? Here anti is no high and nasal bone is absent. This is a picture of trisomy 80 mostly. उसमें nasal bone absent है और thickness ज्यादा है. Can you differentiate? So anti scan should be anti कितनी होनी चाहिए? It should be less than 2.5 mm. If it is more than 2.5 mm, then confirmation is required. So first trimester में जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन कौन से